Hello students, this is Praveen Shukla and today we are going to discuss about first chapter of class 12 chemistry, the solid state. So before jumping straight away to the solid state, let us discuss a little bit about the different states of matter. Different states of matter, I think you all people have already gone through this one. Most of लोगों को पता ही होगा कि there are three states of matter: solid, liquid and gas. But what is the basic difference behind all these three between all these three states? Okay, the difference is, सबसे पहले तो इतना पता होना चाहिए आप लोगों को कि all the states are made up of particles. मैटर किसी भी स्टेट में रहे, there are particles inside the matter, and which exactly define its behavior, its composition, its properties. So अब ये एक्चुअली ये पार्टिकल के आगे पीछे ही पूरी केमिस्ट्री घूमती है, ठीक है। तो इतना माइंड में फिक्स रखो कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर का वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये पार्टिकल का बिहेवियर सॉलिड में अलग है, लिक्विड में अलग है, गैस में अलग है, ठीक है। इसीलिए तो तीन स्टेट है ना। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेट। सो जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक पिक्चर हमने लगाया है, इसमें ये बता रहे हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर थ्री डिफरेंट कंटेनर्स। ओके, एक जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें assume some gases are inside, so the particles of gases, they are having good movement, and distance between the particles is also very good as compared to that which is shown in the liquid container. अभी लिक्विड में क्या है कि you can see the particles but movement बहुत ही कम है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है मूव कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस भी थोड़ा बहुत है पार्टिकल्स के बीच में। बट थर्ड वन, द सॉलिड स्टेट, कोई मूवमेंट नहीं है पार्टिकल्स का उधर है, जैसे ही रखा वैसे का वैसा ही है, देर इज नो मूवमेंट, एंड दे आर टाइटली पैक्ड। यू कैन से डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट नील के बराबर है, दे आर टाइटली पैक्ड। सो वी कैन से कि लाइक जैसे कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ मतलब चिपका के रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें ये याद रखना है। सॉलिड में पार्टिकल्स दे आर टाइटली पैक्ड, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स is almost very less as compared to liquid and gas, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड के बारे में, ठीक है। सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट फॉर सॉलिड स्टेट। General characteristics of solid states. Solid states are one of the three states of matter, and they are characterized with the following features. सबसे पहले characteristics है definite shape and volume. Okay, solids have a fixed shape and volume, which means they maintain their shape and do not flow like liquids and gases. Okay, for example, just take an example of solid like you can say कोई भी चीज़ ले लो आप, आपके नज़दीक की कपबोर्ड है, टीवी है, सोफ़ा है, टेबल है, कुर्सी है, ठीक है। सो विच यू इजली कैन कैच फ्रॉम हैंड, बट इफ़ इन केस ऑफ लिक्विड कैन यू कैच फ्रॉम हैंड? पानी को मैं बोलूँगा ठीक है हाथ से पकड़ के पानी को लाओ इधर, नहीं, आपको किसी कंटेनर में उसको डालना पड़ेगा। यू हैव टू पोर इन सम कंटेनर, देन ओनली यू कैन टेक द वाटर टू मी, ठीक है। इफ़ आई से के थोड़ा ऑक्सीजन लेके आओ मेरे लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन किसी कंटेनर में डालना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेरे पास ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है वहाँ पे कुछ रोड पे कुछ पत्थर है वो लेके आ जाओ, या मैं आपको बोलूँ कि जस्ट पिक some rice and give it to me, because see, rice, wheat or stones, they all are solids, they have a fixed shape, okay।
so you can carry them easily. But in case of liquid, you need a container, and in whatever the container you are pouring the liquid will occupy its shape. पानी को आप बकेट में डालोगे तो बकेट के शेप का हो जाएगा, उसको आप बोतल में डालोगे बोतल के शेप का हो जाएगा. So just keep in your mind, solid is having a definite shape and volume. Now another most important property of solid, high density. ठीक है, अब ये हाई डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ. डेंसिटी मीन्स हाउ मच डेंस दे आर. dense dense means the quantity of mass per unit volume of a substance. मतलब if it is in a given volume, how much quantity of particular substance is there. जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक बस है, ठीक है, बस के अंदर 50 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, 15 लोग आराम से खड़े होके जा सकते हैं, टोटल 65 लोग जा सकते हैं. तो इस तरह की 3 बस को आप एज्यूम करो. यू जस्ट एज्यूम देयर आर 3 buses. In first bus there are 65 people, everything is occupied, there is no place for more people to go inside. Now another bus, second bus is capacity is 65 people, but only 25 people are sitting inside and they are having some distance in between them. Okay, now imagine the third bus. The third bus is having only 2 to 3 people inside and they are sitting far away from each other. So ये 3 केस है आपके पास. तो इसमें जो फर्स्ट बस है, वो फर्स्ट बस में 65 लोग हैं और भी लोग नहीं आ सकते हैं. So here what if density point of view, if you will see, the first bus is very high dense, the second bus is little bit far less dense, and the third one is कुछ भी डेंसिटी नहीं है, बहुत जगह है, almost 99% खाली है. ठीक है. So here what they are saying, the particles in the solid, they are packed closely together resulting in a high density compared to liquids and gases. तो जैसे कि फर्स्ट बस का हमने एग्जांपल दिया कि it is totally packed, very highly dense. So in solids also, particles, they are packed closely together which results in a high density. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है and this is the difference between solid, liquid and gas in considering the density. Okay, next important property, strong intermolecular forces. ये क्या है भाई? अभी पिछली स्लाइड में हमने बताया कि each state of matter is made of particles. ठीक है, पार्टिकल्स के बीच कुछ फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन. सो सॉलिड में क्या होता है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द सॉलिड, the force of attraction repulsion is very high, because of that only they are packed closely together. But in case of liquid it is lesser than solid, and in case of gas very less. Okay, so this is one of the property of solids. We will discuss more in detail when we move forward in chapter. Then we will discuss more in detail about the intermolecular forces. Okay, the next important property is limited compressibility. अभी compressibility क्या होता है? What does it mean? Compressibility means whether I am able to compress that particular matter or not. Let us say a gas balloon fixed with a filled with a gas. Okay, balloon filled with a gas, you can compress. If the balloon filled with a water, you can compress by your hand. But if balloon filled with a sand or filled with a, let us say wheat or rice, just for example, can you compress as if it is filled with a water or gas? No. So liquids they are having a limited compressibility. This is one important property you have to keep in your mind. Now next important property, rigid structure. Rigid structure means the fixed position of a particle in the solid
given them gives them a rigid structure, which means they are unable to change the shape easily. अभी इसका एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि आयरन है, आयरन का शेप आपको चेंज करना है। चलो मैं आपको आयरन की एक स्टिक देता हूँ, हैवी थिक स्टिक। कैन यू चेंज इट्स शेप इजीली? No, you cannot. You have to melt the iron first, then you have to use a hammer to change its shape, because iron is a solid, and this is one of the important property of a solid, like its shape cannot be changed easily. However, it depends upon various other factors also, what kind of solid it is, what kind of it is, metal, wood, or plastic. But even though in any case, if it is solid, you cannot change its shape easily. So what is the reason behind it? The fixed position of particles. जैसे कि अभी बताया, सब कुछ पार्टिकल का खेल है भाई। देखो आगे चल के भी पार्टिकल के बारे में बार बार जिक्र आएगा। सो आपको माइंड में रखना है कि भाई पार्टिकल से ही सब कुछ बनता है। पार्टिकल से सॉलिड बना है, पार्टिकल से लिक्विड बना है, पार्टिकल से गैस बना है। अब पार्टिकल्स का बिहेवियर, मूवमेंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसका व्हाट यू से, द डिस्टेंस, वाइब्रेशन, मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पार्टिकल का ही बिहेवियर एक्चुअली हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी। सो वो हमेशा माइंड में रखना है कि बिकॉज ऑफ फिक्स पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड, it gives them a rigid structure, which they are unable to change the shape easily. ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस स्ट्रक्चर, जैसे कि सॉलिड में जैसे हमने अभी बात की कि देयर आर पार्टिकल्स इनसाइड द सॉलिड्स। सो पार्टिकल्स तो है, बट कभी कभी क्या होता है कि किसी सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ एक टाइप की है, जबकि दूसरे सॉलिड में अलग टाइप की है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट्स की क्लास है। क्लासरूम में वी हैव सो मेनी बेंचेस। On each and every bench there are two students. The two students are sitting, having maintained a distance between them, and there is one student behind each student. So अगर टीचर नहीं है क्लास में और प्रिंसिपल ऐसे ही दरवाज़ा खोल के देखते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 12 स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये समझ के चल रहे हैं कि दे आर डिसिप्लिन, दे आर रेगुलर, एंड दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग। एंड इवन इफ क्लास के अंदर क्लास टीचर नहीं है, फिर भी ऑल पीपल दे आर इन द स्टडी, क्योंकि बिकॉज दे आर इन द बोर्ड एग्जाम एंड दे हैव टू स्टडी अ लॉट एंड दे हैव टू एक्सेल and they are in a competitive mode. So I believe everybody is disciplined, regular, and studying all the time. So जैसे ही प्रिंसिपल ऐसे डोर थोड़ा सा खोल के देखते हैं कि सो हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम रेगुलर पैटर्न है। हर एक बेंच पे दो स्टूडेंट हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस मेंटेन है, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के पीछे एक स्टूडेंट है। सो क्लास के एक कोने से अगर ये पैटर्न देखते हैं, सो इट विल लुक लाइक ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। बट अगर यही सिचुएशन क्लास 1 के स्टूडेंट्स क्लास 1 में चले जाएं, प्रिंसिपल, एंड देयर इज नो टीचर इनसाइड। सो बेंचेस तो हैं, बेंच की अरेंजमेंट तो ठीक है, बट किसी बेंच पे आपको दो स्टूडेंट दिख रहे हैं, किसी पे एक दिख रहा है, किसी पे एक, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई बात कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई ड्राइंग बना रहा है। सी, सो देयर आर लॉट ऑफ इरेगुलरिटी इन दैट क्लास, and uh, the arrangement is totally disordered. So here in this case, such kind of arrangement we will consider it as amorphous arrangement. But whatever the arrangement you see there, regular, orderly arrangement in class 12 science class, that is a crystalline arrangement. So अभी solid के केस में क्या होता है? So the crystalline solids are those solids where the particles are arranged in a, फिर से पार्टिकल आ गया, हाँ याद रखना है, everything is made of particle and we are gonna discuss about particles only every time.
So particles जो है in those solids where the particles are arranged in a regular and repeating pattern, those are called crystalline solids, while amorphous solid they have disordered arrangement. ठीक है, याद रहेगा. एक पिक्चर भी दिया है यहाँ पे, देख लो. crystalline SiO2 quads, it's star kind of arrangement everywhere, कहीं से भी आप देखो वो स्टार ही दिखेगा. But here in case of SiO2, ठीक है, सब जगह से थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह का नज़र आ रहा है. ओके, याद रहेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, thermal expansion. Thermal expansion means when you are heating any substance, either liquid, gas or solid, its temperature starts increasing. When temperature increase at certain point of time, the matter itself starts expanding. जैसे कि you will take a water in bowl and you will start heating on gas. So after some time, the water will start boil. Start boil means it is getting expanded. Okay, so it is applicable for solids also, but very high amount of energy required. Okay, so expansion, contraction is everywhere, but in some cases solid के केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लिक्विड के केस में कंपैरेटिवली कम, गैस के केस में उससे भी कम. वो बहुत जल्दी एक्सपांड होगा या बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, सो thermal expansion also important property. Now conductivity. Conductivity, mm, conductivity means like what is mentioned here. Some solids are good conductors of electricity and heat, while others are poor conductors or insulators. So what they are saying, some solids, कुछ solids बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, ये सब होता क्या है. Let me give you little bit explanation. Electrical conductivity, it is basically a measure of a material's ability to conduct electric current. मतलब ये पर्टिकुलर सॉलिड इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास हो सकती है कि नहीं. ये सॉलिड तो बहुत सारे होते हैं, मेटल को भी सॉलिड बोलते हैं, प्लास्टिक भी सॉलिड है, वुड भी सॉलिड है, बट वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या? नहीं. मेटल से यस ऑफ कोर्स, कॉपर वायर्स ये सब मेटल के ही बनते हैं, मीन्स कॉपर के ही बनते हैं. सो सम solids they are good conductors of electricity while others are poor. उसी तरह से heat conductivity means like you kept two different solids under the sun. एक जगह मेटल रखा है, दूसरी जगह वुड को रखा. ठीक है, तो मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, वो गर्म हो जाएगा एकदम से जल्दी से, जबकि वुड है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा उसका. सो heat conductivity is good in some some solids, while in other solids it is poor. Now the another important thing about the solids, mechanical properties like hardness, elasticity, ductility, brittleness. ये सब भी प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इट डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट. सो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट किस तरह की है, डिपेंडिंग अपॉन दैट दे एग्जिबिट द डिफरेंट वैरायटी ऑफ हार्डनेस. किसी की हार्डनेस कम होती है, किसी की ज़्यादा रहेगी. इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ये सब लाइक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द composition and structure of particular solid, which in turn depends upon the particle arrangement. ओके, सो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया है. सो सॉलिड्स जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि वट एवर अराउंड यू कैन सी लाइक कपबोर्ड है, बेड है, टेबल है, कुर्सी है, टीवी है. ठीक है, so solids they are important component which is used in our daily lives,
and their properties also make them useful in a wide range of applications. So solids are used in wide range of applications. It starts from building materials to electronics to transportation vehicles, then to make a container like सॉलिड्स का यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, शिप्स बनाने से लेकर के ट्रेन रेल बनाने तक, रेल की पटरियाँ बनाने तक, व्हीकल्स तो हैं ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर की सारी चीज़ें, बिल्डिंग वगैरह, ये सब मतलब सॉलिड से ही बनते हैं. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड about the solid, to learn about the solid, to go through in deep to understand what exactly the solids are and different kinds of solid and their behavior. Thank you very much सुनने के लिए. I think the next topic in the solid state is amorphous and crystalline solids. Okay, we will discuss soon about this.